Now I am starting exercise 1E of perimeter and area. First of all, I tell you about circle. This is our circle. This is the center. And from center to circumference, this is our circumference. This is called circumference. The distance between center to circumference is called radius. And double of radius is called diameter. Distance from this point to this point called diameter, and distance from center to circumference is called radius. The circumference, this distance is called circumference, and the formula of circumference is equal to 2 pi r, where pi is equal to 22/7 or 3.14, and area of circle is equal to pi r square. Now come to the question number first, exercise 1. You find the circumference and area of the circle. You have to find circumference and area of circle. In this पार्ट फर्स्ट में रेडियस दिया है, सेकंड में रेडियस, थर्ड में डायमीटर, फोर्थ में डायमीटर. डायमीटर का आधा रेडियस होता है. तो आई एम डूइंग थर्ड पार्ट. डायमीटर इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, सो रेडियस इज इक्वल टू 35/2, एंड द फार्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 pi r. 2 pi r, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r 35/2 इज इक्वल टू, आफ्टर सॉल्विंग आवर आंसर कम 110 सेंटीमीटर. Now we find area. Area formula pi r square, 22/7 into radius 35/2 into 35/2. After solving 1925/2. After dividing 962.5 centimeter square. It means this is the area and this is the circumference. This is the circumference and this is the area. Similarly, you can do all part of first. Now come to the question number 2. See question number 2. Find the radius of a circle and its area if circumference is. इसमें रेडियस निकालना है और एरिया निकालना है, और दिया क्या है, सर्कमफ्रेंस दिया है. सर्कमफ्रेंस मीन 2 pi r. द वैल्यू ऑफ 2 pi r इज गिवन. दिस इज आल्सो द वैल्यू ऑफ 2 pi r. दिस इज आल्सो द वैल्यू ऑफ 2 pi r. दिस इज आल्सो द वैल्यू ऑफ 2 pi r. फर्स्ट क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग. Circumference is equal to 176 centimeter, but circumference formula 2 pi r. It means 2 pi r is equal to 176. 2 into 22/7 into r is equal to 176. r is equal to, बाकी सब उधर चला गया तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे. आफ्टर सॉल्विंग r is equal to 28 centimeter. So I calculate radius 28 centimeter. When we find the value of radius, now area is equal to pi r square. पाई की वैल्यू 22/7 एंड r 28 into 28. आफ्टर सॉल्विंग your answer come 2464 centimeter square. I am doing third part also of question number 2. Given circumference is equal to 16 pi, but circumference 2 pi r, so 2 pi r is equal to 16 pi. r is equal to 16 pi upon 2 pi. pi से pi cut, 2 8 जा 16. The value of r is equal to 8 centimeter. Now we find area pi r square. pi की वैल्यू 22/7 नहीं रखा, बिकॉज इन आंसर शीट our answer area is given in pi, so we do not put in place of pi 22/7. pi के प्लेस पर pi और r की जगह 8 into 8 is equal to 64 pi centimeter square. Now come to the question number 3rd. Find the diameter of a circle and its circumference if its area. इसमें एरिया दिया है, ये तीनों एरिया है और आपको डायमीटर निकालना है और सर्कमफ्रेंस. एरिया इज इक्वल टू दिस, बट एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6.16 इंटू 7/22, मतलब 22/7 दैट गो दैट साइड. फर्स्ट ऑफ ऑल आई फिनिश डेसिमल. जब डेसिमल खत्म किया तो नीचे 2 जीरो बढ़ गई. आफ्टर सॉल्विंग आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7, मतलब 49/25. तो r is equal to square root of 49/25 is equal to 7/5. The value of r is equal to 7/5. जब r की वैल्यू पता लग गई तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू r, 2 इंटू 7/5 इज इक्वल टू 14/5. और कम 2.8 सेंटीमीटर.
Now circumference is equal to 2 pi r. 2 pi r की वैल्यू 7/5. Put the value of r. After solving, our answer comes 8.8 centimeter. This is the circumference and this is the diameter. Now come to the question number 4. A bicycle wheel is 1 meter 26 सेंटीमीटर इन डायमीटर. एक बाइसिकल व्हील है, उसका डायमीटर 1 मीटर 26 सेंटीमीटर है. कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रोटेशन ऑफ द व्हील एंड सेकंड द नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ द व्हील नीडेड टू कवर 1.98 किलोमीटर. दिस इज आवर व्हील. ये साइकिल का पहिया है जिसका डायमीटर 126 सेंटीमीटर या 1 मीटर 26 सेंटीमीटर या 126 सेंटीमीटर. तो दिस इज द डायमीटर. सो रेडियस इज इक्वल टू 63. Now we calculate the circumference. 2 pi r की वैल्यू 63. Our answer comes 396 centimeter. If we change in meter, तो we can say 3 meter 96 centimeter. इसका circumference 396 centimeter है. तो अगर ये एक चक्कर लगाएगा, so distance travel in one round rotation. एक चक्कर में कितना चलेगा? 3 मीटर 96 सेंटीमीटर, 396 सेंटीमीटर चलेगा. So this is the first part. And now in second part he is saying कि 1.98 किलोमीटर अगर इसको चलना है तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई चेंज 198 किलोमीटर इन सेंटीमीटर. तो बी मल्टीप्लाई बाई 1 लाख बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर. तो बी मल्टीप्लाई बाई 1 लाख. तो आवर आंसर कम 1,98,000 centimeter. So number of rotation to cover 1.98 kilometer is equal to this total distance upon cover in one distance, and cover in one distance is 396 centimeter. So we divide by this. After solving our come 500 rotation. It means वो पहिया 500 चक्कर लगाएगा 1.98 किलोमीटर जाने में. Now come to the question number 5. A 54 centimeter long piece of wire is bent into a shape of semicircular are bounded by its diameter. Find its radius. एक 54 सेंटीमीटर लंबा तार है, उसको हमने ऐसे अपने हाथ से ऐसे मोड़ दिया, सेम ऐसे सेमी सर्किल का शेप दे दिया. तो इफ दिस इज योर सर्किल देन व्हाट इज द डिस्टेंस? दिस इज कॉल्ड 2 पाई आर. 2 पाई आर. और अगर हम इसका आधा सर्किल बनाए, इतना ही सर्किल बनाए, तो ये कितना होगा? 2 पाई आर का आधा यानी कि पाई आर. तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड पाई आर एंड दिस इज आर एंड दिस इज आर. तो पाई आर यहाँ से यहाँ तक, आर यहाँ से यहाँ तक और आर यहाँ. तो टोटल डिस्टेंस जो टोटल तार है वो इस शेप में आ गया. पाई आर प्लस आर 2 आर. पाई आर प्लस 2 आर इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर. वी टेक आर कॉमन. पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 54. आर पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2/1 इज इक्वल टू 54. R after solving R into 36/7 is equal to 54. 36/7 go that side and our answer come R is equal to 21/2. Divide, then our answer come 10.5 centimeter. It means the radius of this semicircle 10.5 centimeter. Now come to the question number 6. A wire is bent in the form of a square of area 1936 centimeter square. If the same wire is bent to form a circle, find the radius of the circle and the area enclosed. You have to find the radius of circle and the area enclosed. Suppose this is your wire. This is your wire, and this wire is shaped into a square, and the area of the square is 1936 centimeter square. This wire is turned into a square whose area is this. So first of all we find side of square. Side of square is equal to square root area. Square root this and this come 44 centimeter. The side of square this is 44 centimeter. And now perimeter of square is equal to 4 into side. 4 into 44 is equal to 176 centimeter. It means the length of this wire. जो तार जिसको हमने ये शेप दिया था, ये इसकी टोटल लेंथ है 176 सेंटीमीटर. अब इस तार को हमने सर्किल का शेप दिया. इस मीन्स ये जो सर्कमफ्रेंस है टोटल जो है 176 सेंटीमीटर.
So 2 pi r, circumference का फार्मूला 2 pi r is equal to 176, 2 into 22/7 into r is equal to this, r is equal to 28 centimeter. The radius of this circle is 28 centimeter. Now area of circle is equal to pi r square, 22/7 into 28 into 28. Your answer come 2464 centimeter square. Now come to the question number 7. A wire is in a circular shape of area 5544 centimeter square. If the same wire is bent in the shape of a square, find the length of a side of a square in area. एक वायर है, उसको सर्कुलर शेप दिया है जिसका एरिया इतना है, और इसी तार को हमने कट करके स्क्वायर का शेप दिया, तो उसकी साइड निकालनी है और उसका एरिया निकालना है. तो दिस इज आवर सर्किल, whose area is this. So area of circle this, but area of circle pi r square. So pi r square is equal to this, and r square is equal to 1764. The value of r is equal to square root 1764 is equal to 42 centimeter. This is your calculation. The value of r is equal to 42 centimeter. It means from this is 42 centimeter. Now we find circumference. Circumference is equal to 2 pi r. 2 pi r की वैल्यू 42 and your circumference is 264 centimeter. The distance, the total distance, the total circumference is equal to 264 centimeter. Now we cut from here our scissor and straight like this, and then turn into a square. This wire is turned into a square, and the अगर ये तार 264 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसको अगर हम स्क्वायर की शेप देंगे तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 264 सेंटीमीटर. सो साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4 इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर. इट मीन्स इट्स साइड इज 66 सेंटीमीटर. नाउ कम टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर. साइड इंटू साइड, 66 इंटू 66 इज इक्वल टू 4356 सेंटीमीटर स्क्वायर. Now come to the question number 8. The area of a ring is 8. A circular pond of diameter 28 meter is surrounded by a path 7 meter wide. Find the area of the path. This is your circular garden, जिसका diameter कितना है 28, and इसके चारों तरफ एक 7 मीटर चौड़ा रास्ता है घूमने के लिए इस गार्डन के. नॉट गार्डन, दिस इज योर पॉन्ड, ये तालाब है आपका, इसके चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा रास्ता है. तो यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पाथ. तो एरिया ऑफ इनर सर्किल, दिस इज योर टोटल 28. तो रेडियस कितना हुआ 14. दिस इज 14, दिस इज 14. तो रेडियस योर 14. एरिया ऑफ इनर सर्किल, अंदर के सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर. दिस इज योर एरिया ऑफ इनर सर्किल. एरिया ऑफ आउटर सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर पाई r. आउटर सर्किल दिस इज योर आउटर सर्किल. तो रेडियस कितना होगा ये, तो दिस इज 14 एंड दिस इज 7. 14 प्लस 7 इज इक्वल टू 21. तो इन प्लेस ऑफ r we put here 21 into 21. After solving, our answer come 1386 centimeter square. This is the area of big circle. This is the area of inner circle. This is the area of outer circle. This is the area of inner circle. We subtract this from this. So area of path is equal to 700 centimeter square. Now come to the question number 11. A circle of circumference 88 centimeter is cut out of a square sheet of paper of side 30 centimeter. What is the area of the paper laid? एक स्क्वायर शेप का पेपर है, इसकी साइड 30 सेंटीमीटर है, इसमें से 88 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस का एक सर्किल हमने कट कर लिया. तो व्हाट इज द एरिया ऑफ लेफ्ट पेपर? First of all, we find the area of this square, 900 centimeter square, and the circle which circumference is 88. 2 pi r is equal to 88, and we find r is equal to 14 centimeter. When we find r is equal to 14 centimeter, now area of circle is equal to pi r square. Pi r square is equal to 616 centimeter square. This circle we cut, which area is 616 centimeter square. Now we subtract 616 from 900.
then area of left paper is equal to 900 minus 616 is equal to 284 centimeter square. Now come to the question number 12. In 12 there are 4 parts, 1, 2, 3, 4. First of all we do this. This is our rectangle whose length is 6 and this is your breadth and this is your length. तो इसका एरिया 9 6 जा 54 centimeter square. Or this is small rectangle, this is circle. So you find the area of this circle and you find the area of this rectangle. Area of this rectangle is 2 into 1, 2 meter square, and area of this circle you find, and after that you subtract the area of this and this area of this both white portion from the total figure. So you find the area of shaded portion. So I think that you can do this question yourself. Now come to the question number second. This you have to find the area of shaded portion. Now come here. This is your 14 meter total and this is your big semicircle. So first of all we find the area of this big semicircle. This is total 14. So from this point to this point radius is equal to 7 meter. The area of big semicircle is equal to 1 upon 2 pi r square. Area of circle pi r square, but area of semicircle half pi r square. So 1 upon 2 pi r square r7. This is the area of this big semicircle. Now this is semicircle and this is semicircle. Both are same semicircle. So first of all we find the area of this. This is 7, total 7. So half of 7, 7 upon 2 is the radius of this small semicircle. The area of small semicircle is equal to half pi r square, 1 upon 2 pi this, and r 7 upon 2 this. After calculating, our answer comes 77 upon 4 centimeter square. Area of this semicircle. Same area of this semicircle 77 upon 4 70 meter square. So area of two small semicircle is equal to 2 into 77 upon 4 is equal to 77 upon 2 meter square. Now area of shaded part. Area of shaded part is equal to this minus this. इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 77 minus 77 upon 2 is equal to 77 upon 2 meter square and dividing 35.5 meter square. So I finish this chapter, this exercise, and now two questions are left, third and fourth. This you also can do yourself and this also. Suppose I am telling about this. This is your 7 and total 14. 14 plus 14 plus 14 plus 14 means the length of this rectangle is 56 and breadth is 14. So first of all you find the area of this rectangle, 56 into 14, the area of this rectangle. Now you find the area of this circle, small circle. There are 4 circles. So you find the area of one circle. After that you multiply by 4. Then you find the area of 4 circle. And then you subtract area of 4 circle from the area of rectangle. Then you find the shaded portion area. Similarly you can do this also. This is find the area of shaded portion formed by a semicircular place over a square. This is a square, 7 sides. Its side is 7 centimeters. This 7, this 7, this 7, this 7. This is also 7. So half of 7 is the radius of semicircle. So you find the area of semicircle, you find the area of square and add both, then your answer comes.